I welcome you all in the next video tutorial of HU Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. Dear all, in this video we are going to cover a previously asked question, and this question was related to the bill assistant duties and responsibilities in the treasury related to the passing of the bill. So first of all, this is for educational purposes. There is no commercialization is involved, and please refer to standard rules and regulation in case of any deviation. So let's see HPTR, Himachal Pradesh Treasury Rules. As you can see, this is the HPTR 2017, and rule number 112 has a clause about the passing of the bill in Treasury. The bill assistant, assisted by a clerk, is required to exercise checks as presented in Annex C6 on the bill presented for the payment apart from any other instruction of the finance department required to be compiled in specific cases with economy instruction and the general checks are. तो क्या क्या ध्यान रखना है बिल असिस्टेंट को पासिंग ऑफ द बिल को पास करने से पहले कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो सबसे पहले एनेक्सर 6 की बात की गई है. सी एनेक्सर 6 क्या बोल रहा है? एनेक्सर 6 चेकलिस्ट फॉर पासिंग ऑफ द बिल. किसी भी बिल को चेक लिस्ट बनाई गई है, उसको पास करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए एक बार देखते हैं. Number one, all the bills, a bill presented at the treasury as a claim for the payment of any amount by the government shall contain the following information or particulars: the nature of the claim, the amount claimed, and the period to which claim relates. If it arises periodically, that is a claim for a pay or fixed allowances. The DDO code होना चाहिए, अनिवार्य है DDO code. The offer sanctioning, the charge, the order sanctioning और उसका order होना चाहिए, office order. Next point, that the officer signing the bill is so authorized by the competent authority and the signature on the bill tally with the specimen applied or supplied to the treasury officer. जो भी साइन है वो टैली किए जाएंगे ट्रेजरी ऑफिसर के द्वारा. जो भी ट्रेजरी ऑफिस में जो साइन दिए गए हैं एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, वो चेक किया जाएगा. The nature of recoveries from the pay allowances of the government servants under each head supported by the schedule showing full particulars of the recoveries. पूरी डिटेल देने पड़ेगी अगर वो रिकवरी से संबंधित है कुछ. Bills requiring counter signature or counter signed by the competent, बिल्कुल होना चाहिए. Next point है erasers and overwriting on any bill is not allowed. This is very important point. Overwriting और eraser नहीं होना चाहिए, बहुत important है ये. Bill will be system generated. अपने आप bill system से generate होना चाहिए, आप manual bill नहीं दे सकते. It will be system generated. Signature is underprinted and other written in hand certificates of the bill. Digital signature shall be allowed. Certificate of DDO that hard copy tallies with electronic data in HPO LTIS. अब ये HPO LTIS क्या चीज है, इसको देखते हैं पहले. As you can see, this is very simple. This is an online treasury information system. ये ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का. HP O for online, OL online, TIS का मतलब क्या है? ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है. इन एग्जर 6 की बात की गई है. आइए अपने कंटेंट पे आते हैं. अब पेज नंबर 55 पे है, आपको याद करने हैं. थोड़ा थोड़ा पेज का भी आइडिया लीजिए ताकि आपको रूल याद हो किस पेज पे क्या रूल है. 112 बात कर रहा है पासिंग ऑफ द बिल के बारे में. क्लियर हो गया? तो क्या क्या चेक्स ध्यान रख रहे हैं? दैट द ऑफिसर साइनिंग द बिल इज सो ऑथराइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड द सिग्नेचर ऑन द बिल टैली विद द स्पेसिफिक. बिल्कुल वही चीजें लिखी है तो एग्जर 6 में लिखी है. द क्लेम इज इन ऑर्डर एंड covered under the rule. बिल्कुल सही है. All the correction, alteration, the voucher were attested with full signature with the DDO, leaving no scope of interpolation whatsoever. The bill is within its validity period, and that the time barred claims are accompanied by the authorization from the competent authority. The deduction made in the bill are duly classified, and the recovery schedules in a specimen form showing the details of deductions are invariably attached within the bill, so that this will also allow the total tally with the entries shown in the bill. तो in case of transfer last pay certificate होना चाहिए. any other instruction the finance department required है वो होनी चाहिए. तो bill passing and the objection register shall not be maintained in physical form. The token number shall be used to track the process of bill. And this token register in treasury having an online treasury information system shall be computerized. That it is to say that the bill shall be digitalized and the token shall be generated instantly by the token clerk on the receipt of the hard copy signed by DDO. तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असिस्टेंट क्लर्क टू बेसिकली मेंटेन और टू चेक द एनेक्सर 6. एनेक्सर 6 की बात हुई है तो दिस इज आपको याद रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट